स्क्रीन नजर आ रही है सबको? स्क्रीन शो हो रही है? यस सर। यस अच्छा चले ठीक है। अच्छा शहीर और मुर्तजा आप स्क्रीनशॉट ले लेना एक सेशन का 2-3 बार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो फीडर के बारे में है। फीडर में हमने रेडियल फीडर, रेडियल में भी सिंगल और डबल एंड फेड फीडर हम पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या है? रेडियल का मैंने आपको मतलब बताया था कि रेडियल एक तरह का ना आपका ट्रांसमिशन लाइन होती है, या इसे आप बस कह लें, जो कि आपका सिग्नल जो पावर आपकी जनरेट हो रही होती है वहां से डिस्ट्रीब्यूट करवाती है डिफरेंट जगहों पे जहाँ पे आपको ज़रूरत हो, उसे हम रेडियल सिस्टम कहेंगे। तो सिंगल एंड फेड रेडियल सिस्टम का मतलब ये है कि आपके पास एक एंड होगा जिसपे आपका लोड होगा, उस लोड को आपने ट्रांसफर करवाना है डिफरेंट पॉइंट्स पे, जैसे ये पॉइंट बी पे ट्रांसफर करवाना है और पॉइंट सी पे ट्रांसफर करवाना है। इसे हम सिंगल एंड फेड रेडियल सिस्टम कहेंगे। यानी कि एक ही हमारे पास सोर्स होगा, कहने का मतलब है उस सोर्स से हमने जिस भी पॉइंट पे, यानी कि 2 पॉइंट हो, 3 पॉइंट हो, 4 पॉइंट हो, जितनी भी लोड हमने ट्रांसफर करवानी है, और दरमियान में ये जो है ये इम्पीडेंसेस लगी हुई हैं, जो कि ट्रांसमिशन लाइन के दरमियान में इम्पीडेंसेस होती हैं, जहाँ पे वोल्टेज हमारे ड्रॉप होंगे, और यहाँ पे हमारी वो जो हमने वोल्टेज लेने हैं यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करवाना है, ये वो पॉइंट होगा। इसी तरह ये भी वो पॉइंट होगा। और ये वाली जो चीज़ है ये पावर फैक्टर है आपका, और ये जो आई है ये आपका करंट शो कर रहा है, यानी कि पहली लाइन का करंट, ये दूसरी लाइन का करंट। ये सिंगल एंड फेड रेडियल की एक फिगर बनाई हुई है। डिस्ट्रीब्यूशन फीडर इसे कहते हैं, जैसे कि अभी बताया। और सोर्स इज प्रेजेंट एट ओनली वन एंड, यानी कि एक एंड पे आपका सोर्स प्रेजेंट होगा, वो बेशक इस साइड पे हो बेशक इस साइड पे हो, दोनों में से किसी भी साइड पे हो सकता है लेकिन एक ही होगा। अगर इस साइड पे होगा तो आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरफ होगी, अगर इस साइड पे होगा तो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन इस साइड में, राइट साइड में होनी शुरू हो जाएगी। पावर एंड फॉल्ट करंट फ्लो इन वन डायरेक्शन, और एक और भी इसका मतलब है कि जो आपकी पावर और फॉल्ट करंट होंगे वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, क्योंकि आपका सिंगल एंड फेड रेडियल है। यानी कि अगर इस एंड पे आपका सोर्स लगा हुआ है तो इस तरफ फ्लो करेगा करंट और पावर, अगर इस एंड पे आपका सोर्स है तो आपकी पावर और करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी। दोनों डायरेक्शन में ये फ्लो नहीं करेगा सिंगल एंड फेड रेडियल। उसके बाद इसकी फेजर डायग्राम है सिंगल एंड फेड रेडियल की, जो कि अभी हमने देखी थी, ये उसकी फिगर है दोबारा। इसकी अब सिंगल हमने फेजर डायग्राम बनानी है। तो ये सबसे पहले हमारे पास VC है, ये I2 करंट है, और ये दोनों के दरमियान एंगल है वोल्टेज और करंट के दरमियान, थीटा 2 के नाम से इसे रिप्रेजेंट किया हुआ है इस एंगल को। और ये VC का मतलब कैपेसिटर के वोल्टेज नहीं है, ये VC का मतलब जो आपका पॉइंट C है, ये वाला पॉइंट C, इस पे जो वोल्टेज आएंगे ये वो पॉइंट C है। वो आपका पॉइंट जो भी एंड पे हुआ करेगा, अब वो आपकी मर्जी है कि आपने 3 का बनाना है, 4 का बनाना है कि 5 का बनाना है। अगर आप 5 का बनाते हैं तो जो पॉइंट यहाँ पे बनेगा उसके वोल्टेज आप पहले लिखेंगे और उसी का करंट लिखेंगे, और उन दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे फिगर के हिसाब से हमारे पास ये पॉइंट C है, उसका करंट I2 है और उसका जो एंगल है वो थीटा 2 है, इसीलिए ये 3 चीजें अभी आई हैं। ये फेजर डायग्राम कंप्लीट बनेगी इस पूरे सर्किट की। सर ये समझ नहीं आई पॉइंट की, आवाज कट गई। अच्छा मैं दोबारा बता देता हूँ। मैंने ये बताया है, सबसे पहले मैंने ये बताया कि ये वाला हमारे पास ना वोल्टेज है, वो वोल्टेज कौन सा है जो सबसे एंड पे हमारा पॉइंट हुआ करेगा फीडर के। जैसे कि ये C पॉइंट एंड पे है तो इस पे C पॉइंट पे जितने वोल्टेज हमारे पास आएंगे यहाँ से ट्रेवल करते हुए, वो वोल्टेज जो है वो हम यहाँ पे
लिख देंगे वो जो वोल्टेज होंगे जितनी भी उसकी मैग्नीट्यूड होगी। तो ये वो VC है जो यहाँ पे वोल्टेज हमें मिल रहे हैं। अब्दुल मनान आपने कुछ कहना है, राइज हैंड किया हुआ है आपने। जी सर, वो बच्चे कह रहे हैं कि आपने मीटिंग लॉक कर दी है, उन्हें एंटर कर दें। नहीं, मीटिंग अब लॉक हो गई है। बास पहले खुद तंग कर रहा था, यानी कि उसे कहा भी था अनम्यूट करें तो नहीं कर रहा था। और पिछले लेक्चर में भी मैंने मीटिंग लॉक नहीं की थी इसलिए कि बच्चे चले एंटर हो जाया करें, लेकिन पिछले लेक्चर में भी आपको याद होगा एक बच्चे ने मस्ती की थी, तो इसलिए मीटिंग अनलॉक नहीं होगी। चलिए ठीक है सर। क्योंकि आपको पता ही है मैंने पिछले लेक्चर में नहीं की थी तो हुआ था ऐसे, बेशक रिकॉर्डिंग सुन लेना आप। और अभी भी ये हो जी रहा है तो ये इसलिए लीक की है लोग मैंने, नहीं तो लोग मैंने करनी नहीं थी। जी अच्छा, मैं ये ठीक बता रहा सर। था कि इस पॉइंट पे जो हमारे पास वोल्टेज होंगे वो VC हैं, और उसके बाद हमने इसी पॉइंट पे करंट देखना है, करंट कितना, क्योंकि फेजर डायग्राम में हमारे पास वोल्टेज, करंट और इम्पीडेंस ये तीन चीजें बनेंगी, वो तीनों चीजें हम शो करेंगे। उसके बाद ये वो करंट है इसी पॉइंट के जो कि हमने I2 से रिप्रेजेंट किया है, ये वाला I2 करंट C पॉइंट पे। उसके बाद ये हमारे पास एंगल है जो दोनों के दरमियान बन रहा है, वोल्टेज और करंट के दरमियान जितना भी एंगल होगा। ये जनरल फेजर डायग्राम है इसलिए ये नहीं शो करवाया हुआ कि कितना एंगल है, लेकिन जितना भी बनेगा वो हमें एग्जांपल में आगे पता चल जाएगा कितना एंगल है। जैसे कि आगे एग्जांपल इसकी है, सिंगल एंड की भी है, डबल एंड की भी है। तो ये वो एंगल है जो जितना भी हो, बेशक 0 डिग्री हो, अगर 0 डिग्री होगा तो ये वाला जो आपको करंट नजर आ रहा है ये वाला करंट यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन अगर 0 डिग्री नहीं होगा, लैगिंग या लीडिंग में होगा, क्योंकि करंट या लैगिंग में होगा या लीडिंग में होगा, तो वो यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर लीडिंग में होगा तो यहाँ पे शो होगा, अगर लैगिंग में होगा तो यहाँ पे ऊपर वाली डायरेक्शन में शो हो जाएगा, जो कि एग्जाम्पल से क्लियर होगा कि वो एंगल जो हमें दिए हैं वो लीडिंग में है कि लैगिंग में है कि यूनिटी है। यूनिटी पे करंट यहाँ पे शो होगा इस डायरेक्शन में, लीडिंग में नीचे की तरफ और लैगिंग में ऊपर की तरफ, वो जितना भी एंगल हो। उसके बाद ये हमारे पास फिर I2 R2 है, ये हमारे पास उसकी रिएक्टेंस है JI2X2, इसी की दूसरे जो पॉइंट है ये वाली, यानी कि पहले X2 और फिर R2, रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों के। यानी कि यहाँ से जो करंट रेजिस्टेंस में से फ्लो कर रहा है ये वाली वो है फेजर डायग्राम, और जो रिएक्टेंस में से फ्लो करेगा वो ये वाली डायग्राम है। उसके बाद ये उन दोनों के दरमियान वोल्टेज है जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं, यानी कि कहने का मतलब क्या है, ये वाले वोल्टेज वो वाले वोल्टेज है जो पॉइंट B से C के दरमियान हमारे पास पूरी इम्पीडेंस लगी होगी। उस पूरी इम्पीडेंस में जितने वोल्टेज ड्रॉप होंगे वो हमारे पास यहाँ पे शो होंगे, और VBC का मतलब वोल्टेज ड्रॉप है। ये याद रखना पॉइंट, क्योंकि एग्जाम्पल में यूज होगा वोल्टेज ड्रॉप VBC। और ये वाली सिर्फ रेजिस्टेंस की इम्पीडेंस है और ये वाली सिर्फ रिएक्टेंस की इम्पीडेंस है, जो कि रियल, और हम रियल पार्ट में और इमेजिनरी पार्ट में, या उसे आप बेस में और परपेंडिकुलर में भी कह सकते हैं, इस डायरेक्शन में लेते हैं। उसके बाद अब हमने सेम इसी तरह जैसे पॉइंट C पे ये चीजें ड्रॉ की हैं, सेम इसी तरह पॉइंट B पे ड्रॉ करनी है। अब पॉइंट B पे जो वोल्टेज होंगे वो VB होंगे, जो कि यहाँ पे शो किए हुए हैं ये वाले वोल्टेज। उसके बाद हमने इसका करंट शो करना है VB का, जैसे हमने VC का शो किया था। अब हमारे पास VB का जो करंट है वो I1 है, VB के करंट को हम I1 कहेंगे तो यहाँ पे I1 शो कर दिया। अब इसी तरह ये भी या लीडिंग होगा या लैगिंग होगा या यूनिटी होगा। अगर यूनिटी हुआ तो वो इसी डायरेक्शन में बन जाएगा इसके फेज में, अगर लीडिंग होगा वो उसके नीचे बनेगा, अगर लैगिंग होगा वो उसके ऊपर बनेगा। अब ये लीडिंग शो करवाया हुआ है और उसका एंगल हमारे पास θ1 है, इसलिए उसको θ1 से रिप्रेजेंट कर दिया है। उसके बाद इसी तरह इसकी भी हमने रिएक्टेंस शो करनी है, और इसका करंट ड्रॉप जो होगा ये इसकी रिएक्टेंस है R1। अब ये IAB इसमें से करंट, यानी कि A से निकल रहा था और B की तरफ जा रहा है, इसलिए इसे IAB का होगा करंट। ये इसके रेजिस्टेंस की और ये इसके रिएक्टेंस की, दोनों की इम्पीडेंस। अब टोटल इम्पीडेंस जो होगी वो वोल्टेज ड्रॉप VAB होगा इस पॉइंट पे, यानी कि इन दोनों के दरमियान जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो ये जो मेन टर्म है ना इस पूरी फेजर डायग्राम में, वो ये दो मेन टर्म है जो डॉटेड लाइन से शो की हुई है। एक BC, यानी कि इन दोनों के दरमियान BC के दरमियान वोल्टेज ड्रॉप कितना आपका हो रहा है। एक आपके पास वोल्टेज AB, यानी कि A और B के दरमियान आपके पास कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है।
उसके बाद इस टोटल की हम इम्पीडेंस ड्रॉ करेंगे जो कि ये वाली है टोटल, यानी कि वोल्टेज जो कि इस पॉइंट पे होंगे VA पे, क्योंकि यहीं से सारे के सारे वोल्टेज आपके पास यहाँ पे ड्रॉप भी हो रहे हैं, इस पॉइंट पे भी पहुंच रहे हैं, फिर यहाँ पे ड्रॉप हो रहे हैं, फिर इस पॉइंट पे पहुंच रहे हैं। तो वो हमारे पास ये वाले वोल्टेज हैं जो कि सबसे ऊपर अभी शो किया हुआ है, जिसे हम रिजल्टेंट भी कहते हैं। इस चीज़ को आप रिजल्टेंट भी कह सकते हैं, यानी कि टोटल वोल्टेज जो होंगे, और वोल्टेज भी कह सकते हैं सोर्स के वोल्टेज हैं, और ये पॉइंट ए पे हैं इसलिए VA लिखा हुआ है। तो सिंपल सी फेजर डायग्राम है और स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बनी हुई है। आप जब अपने लैपटॉप्स वगैरह में भी ओपन करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप आपको ओपन हो जाएगी। सेम इसी तरह अब हमारे पास यूनिटी पावर फैक्टर की एक फेजर डायग्राम को दिखाएंगे कि यूनिटी की कैसे होती है। अब यूनिटी का भी आपको यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, जो मैं पिछली एग्जांपल में भी बता रहा था कि यूनिटी की ऐसी बनेगी। तो सबसे पहले हमारे पास वैसे ही पॉइंट सी पे वोल्टेज आएंगे वो जितने भी हुए, उसके बाद हमारे पास टोटल वोल्टेज आएंगे, उसके बाद अब ये देखें, ये वही बात है जो मैंने पहले बताई थी कि जितने वोल्टेज आपके सी पे होंगे ना, अगर वो यूनिटी होगा यानी कि उसमें ना ही पावर फैक्टर लीडिंग है ना ही लैगिंग है, यानी कि कोई पावर फैक्टर मान लीजिए बिल्कुल यूनिटी है, तो आपकी उसी फेज पे यानी कि जो अगर सी है तो उसी फेज पे आपका वो करंट शो हो जाएगा। आई मैग्नीट्यूड आगे पीछे हो सकती है, यानी कि इसकी मैग्नीट्यूड हो सकता है बहुत ज्यादा हो, इसकी मैग्नीट्यूड हो सकता है बहुत कम हो, जो कि एरो हेड से भी पता चल रहा है कि इसकी मैग्नीट्यूड इतनी है और VC की मैग्नीट्यूड इतनी है। लेकिन जब यूनिटी पावर फैक्टर होगा तो वो दोनों एक फेज में आएंगे, यानी कि उनके दरमियान एंगल ना ही लीड कर रहा होगा ना ही लैग कर रहा होगा। उसके बाद इसी तरह उनकी रेजिस्टेंस भी फिर इन फेज हो जाएगी। ये आप लोगों ने ओम लॉ भी पढ़ा होगा, और इसके बाद सेकंड ईयर की फिजिक्स में भी ये चीज देखी होगी कि वोल्टेज और करंट जब इन फेज इकरार दोबारा कहना क्या कह रहे हैं इकरार? हेलो हाँ जी, आप कोई कह रहे थे कि वैसे ही आवाज आ रही? सर, वैसे ही आ गई सर ऐसे। अच्छा अच्छा, चलें सही। जी जी, अच्छा, तो ये सॉरी सर। रेजिस्टेंस भी इन फेज में हो जाएगी इसके, जो कि इन फेज में शो भी की हुई है इन दोनों की रेजिस्टेंस, क्योंकि जब कोई लीडिंग या लैगिंग होगा ही नहीं तो रेजिस्टेंस इन फेज ही रहेगी। फिर उसकी रिएक्टेंस भी बिल्कुल उसके इन फेज होगी उस रेजिस्टेंस के, क्योंकि ये अगर बेस है तो ये उसका परपेंडिकुलर कहलाएगा रिएक्टेंस पार्ट, और ये उसके वोल्टेज ड्रॉप होंगे VBC। ये अब सेम उसी तरह ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन दोनों के दरमियान जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं वो कितने हैं, तो वो VBC से रिप्रेजेंट किए हुए यहाँ पे भी, और वो ये वाले वोल्टेज होंगे जो ड्रॉप हो रहे होंगे दोनों के दरमियान, यानी कि इस पॉइंट में जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं, और ये हम कैलकुलेट भी करेंगे आगे एग्जाम्पल में। उसके बाद सेम इसी तरह ये VB है, यानी कि इस पॉइंट पे जो वोल्टेज है, और ये उसका इन फेज करंट है VB का एक ही डायरेक्शन में, और ये उसकी वैसे ही सेम यूनिटी पावर फैक्टर के लिए रियल पार्ट है, ये उसका इमेजिनरी पार्ट है, और ये उसके दरमियान वोल्टेज ड्रॉप है VAB पॉइंट के दरमियान, और ये उसकी रिजल्टेंट है जो कि VA के नाम से है, यानी कि सोर्स वोल्टेज। तो यूनिटी पावर फैक्टर की डायग्राम सेम उसी तरह है, बस इसमें यूनिटी का एक कंसेप्ट यूज हुआ है, बाकी बनी उसी तरह है जैसे पहले बनी थी। ईजी है, डिफिकल्ट नहीं है। उसके बाद डबली एंड फीडर। अब डबली एंड फीडर नाम से पता चल रहा है कि कैसा होगा। वो कैसा होगा कि हमारे पास से दोनों साइड पे सोर्स लगे होंगे, एक को आप जनरेटर के तौर पर यूज कर सकते हैं, एक को आप मोटर के तौर पर यूज कर सकते हैं, यानी कि आप दोनों से ले सकते हैं। इसे आप ये भी कह सकते हैं कि दोनों तरफ करंट आपका फ्लो करेगा, इस साइड लेफ्ट साइड से राइट साइड पे भी और राइट साइड से लेफ्ट साइड पे भी, तो उसे हम डबली एंड फीडर कहा करेंगे। जैसे कि अभी आपको नजर आएगा डबली एंड फीडर, ये देखें जो आपके वोल्टेज सोर्स हैं वो दोनों तरफ लगे हुए हैं, जिसे हमने पॉइंट A और D कहा हुआ है, और दरमियान में वही पॉइंट है जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, और उनके करंट वगैरह और रिएक्टेंस वगैरह सेम वैसे ही रिप्रेजेंट की हुई हैं। तो सोर्स इज प्रेजेंट ऑन बोथ एंड्स, दोनों एंड पे आपके सोर्स प्रेजेंट है इसमें, और पावर एंड फॉल्ट करंट फ्लो फ्रॉम बोथ एंड, और पावर और फॉल्ट करंट भी दोनों एंड पे फ्लो कर रहा है, जैसे उसमें एक डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था। बैटरी वोल्टेज, और इसको हम यूज किस में करते हैं, बैटरी वोल्टेज रेगुलेशन में इसको हम यूज करते हैं। और ये पॉइंट, ये अब वो पॉइंट होगा जिसपे वोल्टेज ड्रॉप होंगे हमारे, इसे हम VAB कहेंगे। ये वो पॉइंट होगा जिसपे हमें वोल्टेज मिलेंगे फिर पॉइंट B यानी कि VB। ये VBC वोल्टेज ड्रॉप, ये पॉइंट BC, ये वोल्टेज ड्रॉप VCD, और ये वोल्टेज हमारे पास गिवन होंगे
या ये वाले गिवन होंगे या दोनों ही गिवन होंगे हमारे पास। अब है इनकी एग्जांपल, सिंगल एंड फीडर की भी एग्जांपल है, डबल एंड फीडर की भी एग्जांपल है। ये अच्छी तरह से समझना इम्पोर्टेंट है एग्जांपल्स। तो जो चीज ना समझ इन एग्जांपल में से आई वो उसी टाइम पूछ लेना, या बाद में भी किसी भी टाइम पूछना हो पूछ सकते हैं आप लोग। तो पहली एग्जांपल है हमारे पास सिंगल एंड फीडर। ये आपको नजर आ रहा होगा, सिंगल एंड फीडर है। तो इसकी है, इसमें ये बताया हुआ है पहले कि 3 फेज है, ये हमारे पास 400 वोल्ट है, क्योंकि 3 फेज में नॉमिनल वोल्टेज 400 होते हैं, और 2 किलोमीटर लेंथ इसकी है, तो ये 2 किलोमीटर शो भी किया हुआ है फिगर में। सीरीज इम्पीडेंस ऑफ द फीडर, सीरीज इम्पीडेंस ऑफ द फीडर, अब यहाँ पे ना सीरीज इम्पीडेंस ऑफ द फीडर लिखी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बता दी हुई है कि हमारे पास जो सीरीज इम्पीडेंस फीडर है वो 0.05 प्लस j 0.1 है, फिगर में शो की हुई है। लेकिन जब पेपर में आएगा तो पेपर में यहाँ पे लिखी भी होगी आपके पास, जो कि कोई भी वैल्यू इम्पीडेंस की हो सकती है, जैसे कि 0.05 प्लस j 0.1 है। और ये भी हो सकता है कि आपको सिर्फ स्टेटमेंट दी जाए, क्योंकि स्टेटमेंट दे के साफ पता चल रहा है कितने फीडर हैं, कितनी लेंथ है, कितनी इम्पीडेंस है, कितना लोड है, तो आपको ये खुद भी ड्रॉ करनी पड़ सकती है पेपर में। तो इजी है, कोई नहीं मुश्किल है। जैसे उन्होंने कहा हुआ है कि पहले 2 किलोमीटर लेंथ है, तो 2 किलोमीटर लेंथ हम शो कर लेंगे, फिर सीरीज इम्पीडेंस जितनी भी लिखी होगी वो सीरीज इम्पीडेंस लिखेंगे, फिर लोड एट द फार एंड ऑफ द फीडर इज 120 एम्पीयर। जो जी मुर्तजा, काफी बच्चे मैसेजेस कर रहे हैं कि एक दफा एंटर कर दें, वैसे उन्होंने बता दिया कि मीटिंग लॉक हो आगे। नेक्स्ट सेशन अब होने वाला है शुरू, उसमें इंटर हो जाए सारे। अभी तो वैसे भी फर्स्ट सेशन आधे से ज्यादा गुजर गया है। ओके ओके। अच्छा, और उसके बाद हमारे पास जो लोड है एट फार एंड ऑफ द फीडर है, फार एंड ऑफ द फीडर का मतलब क्या है कि ये हमारा फीडर था, इससे फार एंड यानी कि एंड पे जो वोल्टेज है वो उसने दिए हुए 120 एम्पेयर, जो कि यहाँ पे आपको नजर भी आ रहे होंगे 120 एम्पेयर करंट, यानी कि 120 एम्पेयर है, और उसका जो पावर फैक्टर है वो 0. यानी कि यहाँ पे ना पहले जब हमने थ्योरीज की थी तब यहाँ पे सिर्फ आईए लिखा हुआ था, यानी कि वो कुछ भी करंट हो सकता था आईए, और यहाँ पे सिर्फ उन्होंने cos थीटा लिखा था, यानी कि वो पावर फैक्टर कुछ भी हो सकता है, cos थीटा पावर फैक्टर को हम कहते हैं। तो वो अब उन्होंने बता दिया है कि 0.8 लैगिंग पावर फैक्टर है, तो ये 0.8 शो करवाया हुआ है लैगिंग, यानी कि अब वैल्यूज दी हुई है, क्योंकि न्यूमेरिकल में वैल्यू देनी भी चाहिए। और लोड जो है वो 80 एम्पेयर है विद 0.9 लैगिंग पावर फैक्टर, और ये वाला जो पॉइंट बी का करंट है वो 80 एम्पेयर 0.9 लैगिंग पावर फैक्टर के साथ है, हैज बीन टैप्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ द फीडर, जो कि उन्होंने बता भी दिया कि मिड पॉइंट ऑफ द फीडर के है, यानी कि पूरा फीडर है एक, उसके मिड पॉइंट पे ये वाला पॉइंट है जिसका 80 एम्पेयर करंट है। और ये वाला भी उसने कह दिया था कि सबसे एंड पे है 120 एम्पेयर, तो वो भी हमने लिख दिया। उसके बाद उसने कहा वोल्टेज एट पॉइंट सी इज फिक्स, वो कह रहा है कि सी पॉइंट पे वोल्टेज अब उसने गिवन कर दी है, यानी कि सी पॉइंट जो कि मैंने कहा था कि यहाँ पे एक वोल्टेज होते हैं वी सी के नाम से, वो उसने कह दिया 230 है, वो चेंज नहीं होंगे, यानी कि यहाँ से फर्ज करें जितने भी वोल्टेज जा रहे हैं ना, लेकिन जहाँ पे जो पहुंचेंगे वो 230 ही रहेंगे। अब उसने इसकी वैल्यू नहीं दी, इसकी वैल्यू दे दी है, तो वो कोई मसला नहीं है, हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वो हम देख लेंगे, अगर इसकी दी हुई तो यहाँ तक कैसे पहुंचना है, अगर इसकी दी हुई तो यहाँ तक कैसे पहुंचना है, वो हम अभी करेंगे। उसके बाद उसने कहा बोथ पावर फैक्टर आर गिवन विद रिस्पेक्ट टू फार एंड वोल्टेज वीसी, और दोनों जो पावर फैक्टर है वो फार एंड वोल्टेज के हैं के करीब है, जैसे ये एक 0.8 है और एक 0.9 है। कैलकुलेट इसमें क्या करने हैं, कैलकुलेट हमने करना है सबसे पहले वोल्टेज ड्रॉप्स इन फीडर। अब मैंने बताया था कि वोल्टेज ड्रॉप हम कहते हैं जो वोल्टेज ड्रॉप हो रही हो दोनों पॉइंट्स के दरमियान, यानी कि इम्पीडेंसेस के अक्रॉस, जैसे कि वी ए बी वोल्टेज ड्रॉप और वी बी सी वोल्टेज ड्रॉप, ये हमने कैलकुलेट करने हैं कि हमारे पास कितने आएंगे। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले करंट चाहिए, तो सबसे पहले हम करंट कैलकुलेट करेंगे। करंट के लिए उसने हमें पावर फैक्टर दिया हुआ है, उसकी मदद से हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले करंट आई बी हम लिख लेते हैं, जो सा मर्जी पहले लिख लें, बेशक आई सी लिख लें। आई बी करंट हमारे पास कितना है 80 एम्पेयर है और 0.9 लैगिंग पावर फैक्टर है, तो यहाँ पे थीटा होता है असल में, और लैगिंग है तो लैगिंग की वजह से माइनस आया है, यानी कि माइनस थीटा। अब थीटा हमारे पास किसके बराबर होगा, जो हमारे पास पावर फैक्टर है वो 0.9 है, यानी कि cos थीटा इज इक्वल टू 0.9 है, तो जब हम थीटा निकालेंगे तो वो cos इनवर्स 0.9 बन जाएगा, क्योंकि हमें करंट के साथ मैग्नीट्यूड और उसका एंगल चाहिए होता है,
पावर फैक्टर नहीं चाहिए होता, तो हमने पावर फैक्टर से एंगल निकालना है और उसका फार्मूला होता है cos थीटा इज इक्वल टू पावर फैक्टर, फिर थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स पावर फैक्टर। तो cos इनवर्स पावर फैक्टर लिखेंगे तो ये हमारे पास थीटा बन जाएगा IB, यानी कि करंट हमें मिल गया है। सेम इसी तरह हम IC करंट निकाल लेंगे। IC करंट में भी उसकी मैग्नीट्यूड इसने दी हुई है और पावर फैक्टर दिया हुआ है, तो हमने थीटा निकालना है और ये भी लैगिंग है, तो यहाँ पे नेगेटिव आ गया लैगिंग के लिए और cos इनवर्स पावर फैक्टर आ गया। पेपर में अगर आपको लीडिंग कह दें तो आपने यहाँ पे प्लस लगाना है, अगर यूनिटी पावर फैक्टर कहते हैं तो यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं लगाना है, यहाँ पे सिंपल बस आपका मैग्नीट्यूड आ जाएगा क्योंकि वो इन फेज होता है। तो ये बातें याद रखना लीडिंग, लैगिंग और पावर यूनिटी के लिए। लैगिंग के लिए माइनस साइन सिर्फ शो होगा, लीडिंग के लिए प्लस साइन शो होगा और यूनिटी के लिए कुछ भी नहीं, यहाँ पे आपने एंगल लेना। अब ये आपके पास IB और IC आ गए हमें करंट, जो कि हमें मेन चाहिए होते हैं, IB करंट भी IC करंट भी। अब हमने वोल्टेज ड्रॉप निकालने हैं, तो सबसे पहले हम वोल्टेज ड्रॉप उसी के निकालेंगे जिसकी हमें वोल्टेज दी हुई है, जैसे कि BC पॉइंट की हमें दी हुई है, तो यहाँ बल्कि दोनों से आसानी से आ जाएगा क्योंकि हमने करंट निकाल दिया है। तो VBC का सबसे पहले निकालेंगे वोल्टेज ड्रॉप, वो हमारे पास कितना होगा, जो उसकी इम्पिडेंस है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे उसके करंट की, क्योंकि फीडर देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है वही यहाँ पे जा रहा है, तो यहाँ पे हमने करंट कैलकुलेट कर लिया है और इम्पीडेंस हमारे पास पहले ही गिवन है, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप आ जाएंगे VBC। तो वो VBC वोल्टेज ड्रॉप ये आए हैं 13.416, ये हमारे पास इम्पीडेंस है और ये हमारे पास करंट है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास इस पॉइंट पे वोल्टेज ड्रॉप आ गए हैं 13.416। उसके बाद सेम इसी तरह हमने वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट करने हैं VAB पे। अब VAB पे भी कैलकुलेट करने का यही तरीका है कि हमारे पास, अब ये बात याद रखना कि VAB पे हमने कैलकुलेट करना है तो इसकी इम्पीडेंस आ गई। अब यहाँ पे जो करंट है ना वो सिर्फ इस डायरेक्शन में नहीं जा रहा, वो इस डायरेक्शन में भी जा रहा है, तो दोनों का सम करंट मल्टीप्लाई उसकी इम्पीडेंस, तो हमारे पास इस पॉइंट पे वोल्टेज ड्रॉप आ जाएंगे। ये बात ध्यान से दोबारा सुन लें कि जब हम इस पॉइंट पे वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट करेंगे तो इसका इम्पीडेंस मल्टीप्लाई ये जो करंट है हमारे पास, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में जा रहा है यहाँ पे सिर्फ, तो हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप आ जाएंगे। लेकिन जहाँ पे जब हम वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट करेंगे तो इम्पीडेंस तो यही आएगी, लेकिन करंट एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक आगे जाके इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ से करंट दो डायरेक्शन में जा रहा है, एक नीचे की तरफ और एक आगे की तरफ, तो ये दोनों का सम करंट होगा मल्टीप्लाई इसकी इम्पीडेंस होगी, तो हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप VAB आ जाएंगे। तो ये दोनों हम वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट कर लेंगे। इसी तरह अगर 3 पॉइंट हो 4 पॉइंट हो तो वोल्टेज ड्रॉप इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसी तरीके से सेम, कि एंड वाले का वोल्टेज ड्रॉप वैसे के वैसे इंपीडेंस लिखती जानी है, लेकिन जब उससे पहले वाले का वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट करना है तो करंट दोनों का प्लस आएगा, इसी तरह फिर तीनों का प्लस, फिर चारों का प्लस, तो हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप आते जाएंगे। उसके बाद हमने कैलकुलेट क्या करना है, वोल्टेज एट सेंडिंग एंड, यानी कि यहाँ पे जो वोल्टेज है VA पे वो कितने हैं, क्योंकि हमें उसने एंड पे वोल्टेज दिए हुए थे टर्मिनल C के 230, लेकिन यहाँ पे नहीं दिए हुए, तो वो हमने कैलकुलेट करने हैं, वो भी इजी है कैलकुलेट करना। क्यों? क्योंकि VA हमारे पास बराबर होता है VC, यानी कि जो एंड पे वोल्टेज है, और जो वोल्टेज ड्रॉप हुए हैं, यानी कि दरमियान में जो वोल्टेज ड्रॉप हुए थे और एंड पे जो पहुंचे हैं, तो जो हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप हुए हैं दरमियान में वो भी हमने कैलकुलेट किए हैं, और जो एंड पे वोल्टेज थे फीडर के वो उसने 230 दे दिए थे, तो इन तीनों को प्लस करेंगे हमारे पास VA आ जाएगा। उसके बाद वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड करनी है। वोल्टेज रेगुलेशन का आप लोगों को फार्मूला याद होगा, नो लोड वोल्टेज। आसम आपने कुछ कहना है? आसम? नो सर, गलती से ऑन हो गई। अच्छा, अच्छा मैं ये बता रहा था कि अगर हमने वोल्टेज ए पे फाइंड करने हैं तो दोनों वोल्टेज ड्रॉप्स जो दरमियान में हुए हैं और जो एंड पे वोल्टेज होंगे उनका प्लस करेंगे तो हमारे पास वोल्टेज सेंडिंग साइड के आ जाएंगे। इसी तरह अगर रिसीविंग साइड के भी फाइंड करने हैं वो हो जाएंगे। उसके बाद हमने वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड करना है, VR वोल्टेज रेगुलेशन है, जो कि आप ये ज्यादातर ना ये इसका मटेरियल जो पिछले लेक्चर में भी था और इस लेक्चर में भी है, मशीनरी इलेक्ट्रिक मशीनरी की बुक से चल रहा है, जो कि मैंने आपको बताया भी था कि मशीनरी से है इसका रेलेवेंट, जैसे फेजर डायग्राम की। तो ये भी वोल्टेज रेगुलेशन भी आप लोगों ने मशीनरी में पढ़ा होगा। नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज ओवर फुल लोड वोल्टेज मल्टीप्लाई 100। अब इसमें नो लोड वोल्टेज VA थे, फुल लोड वोल्टेज VC थे, तो इसलिए VA माइनस VC ओवर VC मल्टीप्लाई 100। VA हमारे पास इतने हैं जो भी हमने कैलकुलेट किए हैं, VC हमारे पास 230 है
और नीचे भी VC मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो हमारे पास वोल्टेज रेगुलेशन आ जाएगी। ये हमारे पास 3 पॉइंट इसके सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद चौथा जो पॉइंट था वो हमने कैलकुलेट करना है एज्यूम्स बोथ लोड हैव। अब ये वही पार्ट आ गया है कि जैसे हमने उसकी फेजर डायग्राम बनाई थी इसी तरह हमने उसकी यूनिटी पावर फैक्टर को कैलकुलेट करना है। तो यूनिटी पावर फैक्टर में मैंने आपको बताया था कि आपने कुछ भी नहीं लगाना है एंगल। ये देखते हैं एंगल कुछ भी नहीं लगा हुआ, यहाँ पे भी एंगल कुछ भी नहीं है, तो एंगल कोई नहीं है, बाकी सेम काम वैसे ही करना है जैसे अभी हमने किया है, तो आपके पास यूनिटी पावर फैक्टर सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह पेपर में हो सकता है आपको लीडिंग पावर फैक्टर आ जाए, तो लीडिंग पावर फैक्टर के लिए आपने सिर्फ माइनस की जगह पे कुछ भी नहीं लगाना है, इनके प्लस लगा देना है और जो एंगल होगा वो तो वैसे ही आएगा, माइनस नहीं यानी कि वहां पे साइन शो करना है। तो आपके पास ये सिंगल एंड फीडर की एग्जांपल सॉल्व हो जाएगी जो कि इजी है, टफ नहीं है, बहुत इजी है। इसी तरह सेम इस तरह की एक और भी हुई है, सेम है, इसमें कोई फर्क नहीं है, बस फर्क इतना है कि अब आपके पास सेंडिंग एंड के वोल्टेज दिए हुए 230 और रिसीविंग एंड यानी कि जो पॉइंट सी है उस पर वोल्टेज आपने कैलकुलेट करने हैं। तो मैंने अभी बताया था कि हम दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं, सिर्फ उसको जाके उस साइड में माइनस करना है, जैसे कि ये देखें माइनस हुआ एक हुआ मिनट डी वाला पार्ट समझाइएगा जी। पिछले एग्जांपल में। पिछले डी एग्जाम्पल पार्ट में समझाइएगा। डी डी पार्ट। पार्ट, अच्छा जी डी पार्ट में ना हमने सेम वही काम करना है जो अभी हम पार्ट बी और सी में करके आए हैं। वो पार्ट क्या हम करके आए हैं, हम करके आए थे कि हमने वोल्टेज फाइंड किए हैं और वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड किया है, लेकिन हमने फाइंड किया लैगिंग पावर फैक्टर के लिए। अब हमने फाइंड करना है यूनिटी पावर फैक्टर के लिए। तो यूनिटी पावर फैक्टर के लिए जब हम फाइंड करेंगे तो मैंने कहा था कि सिर्फ मैग्नीट्यूड करंट की आती है, कोई एंगल नहीं शो होता, यानी कि उसका एंगल 0 होता है क्योंकि वो इन फेज होता है, जैसे कि फेजर डायग्राम में इन फेज बना हुआ था तो वो 0 एंगल था। तो एंगल कुछ नहीं आएगा दोनों का, बाकी सिर्फ मैग्नीट्यूड आएंगी और बीसी हम निकाल लेंगे। इसी तरह इम्पीडेंस को उससे करंट से मल्टीप्लाई करके, सेम इसी तरह जब ए भी निकाल लेंगे इम्पीडेंस को दोनों के करंट का सम लेके मल्टीप्लाई करेंगे जैसे हमने पहले किया है। उसके बाद हम वी ए निकालेंगे सेम उसी तरह तीनों को प्लस करके, और फिर वोल्टेज रेगुलेशन निकाल लेंगे सेम वो फार्मूला लगा के। चेंजिंग सिर्फ एंगल की है यानी कि ये उससे इजी हो गया। यूनिटी पावर फैक्टर लैगिंग या लीडिंग से इजी होता है क्योंकि उसमें एंगल नहीं आते। तो ये सेम वही चीज की हुई है जो वहां पे की हुई। उसके बाद यहाँ पे इस एग्जांपल में सिर्फ इतना फर्क है कि आपके पास सेंडिंग के वोल्टेज दे दिए हुए और रिसीविंग के अब नहीं दिया, आपने रिसीविंग के कैलकुलेट करने हैं, वो बस जाके उधर माइनस हो जाएंगे तो आपके पास रिसीविंग आ जाएगी, क्योंकि आपने फार्मूला पीछे देखा है, दोबारा देख लें, ये वाला फार्मूला है आपके पास है ये, इसमें अगर आपने VC निकालना है तो ये दोनों जो प्लस हो रहे हैं उस साइड में जाके बस माइनस हो जाएंगे, तो आपके पास VC के वोल्टेज आ जाएंगे। तो ये सेम वही एग्जांपल है, ये आप लोगों ने खुद करनी है। अब ये मैं करवा देता हूँ, ये डबली फीडर है यानी कि दोनों एंड पे आपके पास वोल्टेज हैं, जैसे कि B1 पे भी आपको नजर आ रहे होंगे 230 है, BD पे भी आपको नजर आ रहे होंगे 230 है, दोनों एंड पे आपको वोल्टेज दिए हुए, यानी कि अब आपके पास जो करंट फ्लो कर रहा है वो दोनों डायरेक्शन से फ्लो कर सकता है, A से D भी फ्लो कर सकता है, D से A भी फ्लो कर सकता है, और पावर भी, एंगल पावर दोनों चीजें दोनों तरफ से फ्लो करें। तो अब हमें ना जब वोल्टेज फाइंड करने हैं तो अब हमें जाहिर सी बात है कि जब दोनों एंड पे जा रहे हैं, इस साइड में भी जा रहे हैं, लेफ्ट साइड में भी, राइट साइड में भी, तो अब हमें वोल्टेज डिवीजन या मैश एनालिसिस ऐसा कुछ करना पड़ेगा। तो सबसे आसान तो यह है कि हम वोल्टेज डिवीजन लगा लेंगे। वोल्टेज डिवीजन यानी कि वो करंट का फार्मूला जिसे हम नोडल एनालिसिस कहते थे, नोडल एनालिसिस से इजीली हो जाएगा क्योंकि हमने बी पॉइंट पे वोल्टेज फाइंड करने हैं, सी पॉइंट पे वोल्टेज फाइंड करने हैं, जो कि उसका पहला पार्ट है कि बी पे वोल्टेज कितने होंगे, सी पे वोल्टेज कितने होंगे। तो उसके लिए हम जब नोडल लगाएंगे, नोडल का फार्मूला क्या होता था, ध्यान से सुनना, जब हमने बी पे यानी कि इस पॉइंट पे नोडल एनालिसिस लगाना है तो नोडल का फार्मूला ये है कि इस पॉइंट का आपने करंट देखना है कितनी डायरेक्शन में जा रहा है। तो करंट जा रहा है एक इस डायरेक्शन में, एक की तरफ, एक जा रहा है आपका नीचे की तरफ करंट, और एक आपका जा रहा है पॉइंट सी की तरफ। तीन डायरेक्शन में आपका पॉइंट बी का करंट जा रहा है नोडल एनालिसिस के लिए। तो आप लिखेंगे VB माइनस VA ओवर इम्पीडेंस, VB माइनस 0 हो रहा है। एक और बात, जब आप हम लिख रहे हैं असल में करंट यानी कि I इज इक्वल टू V ओवर R, लेकिन अगर आपको उसी सोर्स पे करंट दिया हो तो फिर आप V ओवर R नहीं लिखेंगे, आप करंट ही लिख लेंगे। जैसे कि करंट दिया हुआ है 50 एम्पेयर और 0.85 टैगिंग, तो हम यहाँ पे इस डायरेक्शन का करंट लिख लेंगे और इस डायरेक्शन में फिर हम वोल्टेज लगाएंगे यानी कि I इज इक्वल टू V ओवर R, VB माइनस VC ओवर इम्पीडेंस।
ये इस पॉइंट पे बी पॉइंट पे मैंने नोडल एनालिसिस लगाई है। दोबारा मैं बता देता हूँ कि जब हमने नोडल एनालिसिस लगानी होती है किसी भी पॉइंट पे, तो आपने देखना है कि उसकी करंट की डायरेक्शन कितनी है टोटल। तो 3 डायरेक्शन हमारे पास टोटल हैं, उन तीनों का सम इज इक्वल टू 0 होगा। अब उन तीनों में से जिस डायरेक्शन में करंट दिया होगा वो हम करंट लिख लेंगे। जिस डायरेक्शन में करंट नहीं दिया होगा उसमें जाहिर सी बात है वोल्टेज और इम्पीडेंस होगी, तो उसको हम वोल्टेज और इम्पीडेंस की फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि V ओवर R। जैसे कि इस पॉइंट की तरफ जाएं तो हमें वोल्टेज दिए हुए VB माइनस VA ओवर इम्पीडेंस, इस पॉइंट की तरफ जाएं तो हमें वोल्टेज दिए हुए VB माइनस VC ओवर इम्पीडेंस, लेकिन इस पॉइंट की तरफ जाएं तो हमें करंट सीधा सीधा दिया हुआ है, तो हम उसको करंट ही लिख लेंगे। अगर यहाँ पे भी करंट दिया होता तो मैं करंट लिख लेता, यहाँ पे भी करंट दिया होता तो मैं करंट लिख लेता, लेकिन यहाँ पे करंट नहीं दिए हुए, तो इसलिए उनको वोल्टेज की फॉर्म में लिख लिया, इसको करंट की फॉर्म में लिख लिया, तो हमारे पास एक इक्वेशन बन गई सिंपल। इसी तरह आपने पॉइंट सी पे लगाना है। जब पॉइंट सी पे लगाएंगे उसके भी 3 रास्ते हैं, एक नीचे की तरफ है, एक लेफ्ट साइड पे है, एक राइट साइड पे है। तो अब आप लिखें इसकी भी इक्वेशन, तो VC माइनस VB ओवर इम्पीडेंस, VC माइनस VD ओवर इम्पीडेंस, और यहाँ पे आप करंट ही लिख लेंगे एज इट इज जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। दो इक्वेशंस आपके पास बन गई हैं, जिनको आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, और साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के बाद आप VB और VC की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, जो कि आपके पास आएंगी ये। उसके बाद सेम उसी तरह वोल्टेज रेगुलेशन हम फाइंड करेंगे, और दोनों पॉइंट पे बी पॉइंट पे भी वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड करना है, क्योंकि हमने VB और VC निकाला है। तो वोल्टेज रेगुलेशन VB पे और VC पे हमारे पास जितना भी आएगा वो हम बता देंगे इतना वोल्टेज रेगुलेशन, और दोनों पे इसलिए फाइंड करना है नहीं, क्योंकि उसने बैंक सवाल में में कहा हुआ है। जी क्या कहा है आपने सही? हाँ ये आपकी आवाज नहीं आ रही सही तरह से, दोबारा रिपीट करना। आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही अब तो। अच्छा, उसने बी पार्ट में कहा हुआ है वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड करना है बी पे और सी पे विद रेफरेंस वोल्टेज। रेफरेंस वोल्टेज आपके कौन से हैं? ये वाले रेफरेंस वोल्टेज हैं, इसी तरह ये वाले रेफरेंस वोल्टेज हैं। Assalamu alaikum. This is lecture number 13 of power distribution systems, and in today's lecture we are going to cover the topics from chapter number 4. So the purpose of today's lecture is to compare the percentage voltage drop profiles of different geometrical configurations of service area. Now service area means the area served by the substation. So we know that with the passage of time, load density is increasing. Load density means load in kVA per unit area, that is in mile square. So this is the load density. So in order to meet the increasing load density, we have two options. What we can do, we can increase the capacity of the existing substation. Now how we can do that? Let's suppose if we have the flexibility of expansion of the existing substation, we can install new transformers within that substation, keeping the service area of the substation constant. Means we are increasing the capacity of the existing substation. The second option is that we can have new substations in order to meet the increasing load demand. So now let's assume if this is the feeder, this is the sending end, this is the receiving end, and let's suppose this is the current flowing through the feeder and Z is the impedance of the feeder. We know that when load increases, this current will increase, and correspondingly the product of current and impedance, which is voltage drop, that will also increase. So this is our main concern, that is when load density increases, the percentage voltage drop also increases. How we can mitigate the increase in percentage voltage drop? So in today's lecture, we are going to see different geometrical configurations, and then we are going to see
which geometry should be selected based on least percentage voltage drop. So we can assume constant load density for short-term planning and increasing load density for long-term planning. So you have already seen the example of this when we did the calculations for transformer. That is, if we want to select the transformer rating for a substation, we can assume that, let's suppose, load will double after 7 years. So what should be the rating of the transformer? And it means that is basically for increasing load density, and it comes under the category of long-term planning. So now over here you can see the types of substation service areas. So over here this is the square shape service area and this is hexagonal shape service area. Now let's see that. So this is basically the feed point. Feed point means the substation. So if this is the substation and this is the feeder emerging from the substation, this horizontal line AB, this is the feeder and this is the substation. And what are these? You have already seen these. These are the laterals, and these dots on lateral represent the distribution transformers. So over here you can see this is the first lateral, second lateral, and so on. And you can also see that the load is uniformly increasing. Over here you can see only 3 distribution transformers, and as we move along the length of the feeder, you can see over here the distribution transformers are increasing. So it means the load density is increasing, or we can say the load is uniformly increasing across the length of the feeder. And what we are going to do, we are going to see the percentage voltage drop for this geometrical configuration, that is for square shaped distribution service area and for hexagonally shaped distribution substation area. So let's see first of all the square shaped distribution service area. So this is the feeder and we are going to perform the analysis for area served by one feeder first, and then we are going to see what will be the total service area that will be served by 4 feeders. So you can assume if this is the feeder 1, feeder 2 will be like this, feeder 3 will be like this, and feeder 4 will be like this. And we can assume that the area served by one feeder will be like this. You can see as laterals are emerging from this main feeder, that is this feeder. So laterals are like this. So load basically lies in this triangular region. So we can assume that the area served by one feeder is of triangular shape. So we are going to perform analysis for this triangular shape, and then we are going to extend that analysis for all these 4 feeders, which basically forms the square shape. So you can see the area served by one feeder is of triangular shape. For this feeder, this is again the triangular shape, and this is going to look like this. And similarly for this third feeder, this will be the area, and for this fourth feeder, this will be the area. So let's see for first feeder. Now instead of considering the scattered load, we are going to assume that load is concentrated at one point, or we can say load is lumped at one point, and the distance of that point from the substation is 2/3 of
the total length of the feeder. So over here, one important point to notice is that you are using the 4 subscript. 4 subscript means this analysis is for 4 feeders. So this is the only difference. If you are having the 4 subscript, it means this analysis is for 4 feeder configuration, and in the second option over here means for the second configuration, you can see the subscript being used is 6. So first of all, we are assuming that the load has been lumped at this point, and the distance of this lump point from the feed point is 2/3 of the length of the feeder. So in order to compute the voltage drop starting from the feed point to the end point of the feeder, for example, if this is the feeder and there are different loads that have been tapped across the length of the feeder, this is, let's suppose, sending end and this is the receiving end, we know that current in this section will be highest, as this is the total current, and similarly current in this section will only be the sum of the currents that are being demanded by these loads. So it means in different sections of the feeder, the current is different and correspondingly the voltage drop will be different. And we can compute the total voltage drop starting from the feeding point to the end user by taking the sum of the voltage drop across all the points. Similarly, for this, if this is the feed point and this is the end consumer, we can compute the total voltage drop by taking the sum of voltage drop from this point up till this point and from this point up till this point. So that will be the total voltage drop from A to C. So let's see that. Voltage drop from A to C will be equal to percentage voltage drop from A to B and B to C. So let's see from A to C. You can see over here, this is point A, this is point C, and A to C voltage drop is percentage voltage drop AB plus BC. AB plus BC. So in order to see the total percentage voltage drop, we are going to define the constant K, that is in percentage voltage drop per kVA mile depends upon load in kVA, conductor size used in the feeder, and the voltage level. The graph shows the relationship between conductor size in American bar gauge. So these are the conductor sizes. The voltage level, these are the voltage levels, and the constant K. So this graph is used to determine the value of K. So we are going to see how we can use this constant K in order to define the total percentage voltage drop across the feeder from the feed point. So first of all, we are going to see the analysis for square service area, and in square service area you can see this is the feeder, this is the feed point, these are the laterals, and we are assuming the lump load at this point instead of considering the scattered load for ease of analysis, and we are going to see that this lump load is located at the distance of 2/3 of the total feeder length, and this highlighted region basically represents the area served by lateral. So now as we are performing the analysis for one feeder, and you can see that one feeder is basically providing the power to this triangular region, that is the load present in this triangular region. So let's see
the analysis for square surface area. So for that, we are going to use some of the terminologies. First of all, we are going to see the load density. So as I have already told you, load density is represented by D and its unit is kVA per mile square. And area served by one feeder in square shaped surface area can be represented as A4. So we are going to see what is A4, and the load supplied by one feeder in square shaped surface area can be represented as S4. So the unit of S4 is kVA and total load will be equal to product of load density into area. So you can see this is in kVA per mile square and this is in mile square. So mile square and mile square will cancel out and you will get the result in kVA. So now let's see what is the area served by one feeder, as A4 represents the area served by one feeder. So you can see over here the area served by one feeder is this triangle, or we can say this triangle. So you know that this is L4, and if I consider this triangle, then it will be easier to visualize. If this is L4, this is L4, it means the base of the triangle is 2L4 and height of the triangle is L4. So if I want to compute the area of this triangle, I can simply use half into base into height, and the base is equal to 2L4, this is L4 and this is L4. So this will be 2L4 and this height is L4. So this is equal to L4 square. So it means the area served by one feeder in square shaped region is L4 square. So we can simply multiply L4 square with load density. We will get the total load served by one feeder. Now we are going to see the total percentage voltage drop. So in order to compute the total percentage voltage drop, we can use the constant K. As I have already told you that constant K is in percentage voltage drop per kVA mile. So it means if we multiply this with kVA and mile, then the kVA and mile will cancel each other and you will get the result in percentage voltage drop. So we know that total load is in kVA. So we can multiply it by S4, that is the total load served by one feeder in 4 feeder configuration. And if we multiply it with total length of the feeder, so we will have K into S4. Now we have considered that the load is lumped at 2/3 of the entire feeder length. So therefore we can multiply it by 2/3 into L4 rather than simply L4. So this basically represents the location of the lump load. This is constant K and this is the total load. Now you can replace the value of S4. We know that S4 is equal to load density into area, and this will be equal to area served by one feeder. We have already seen in the previous slide. This is basically L4 square. So we can simply use the value over here. This will be D into L4 square, and if you replace this, you will get 2/3 is 0.667, this L4, and when it is multiplied by this L4 square, this will give you L4 cube. K is directly from here and this is D, so you can see D over here. So what we have done, we have just replaced the value of S4 over here and
you can see this. So I can write it like this, D into L4 square into L4. So this is basically the value of S4. So this is the total percentage voltage drop. Now we have hexagonal service area. So in hexagonal service area, this is the feed point. This is the first feeder, and correspondingly you can have second feeder over here, third feeder over here, fourth, fifth and sixth. Percentage voltage drop in case of sixth feeder network will be K, that is percentage voltage drop per kVA miles, and this will be multiplied by the load served by one feeder and the length of the feeder. So length of the feeder will be once again 2 by 3 of L6, as we are considering the lumped load. So now we know that S6 will be equal to, this is basically the total load served by one feeder. This will be equal to load density into area served by one feeder. So now the question is, we need to compute this A6, and this A6 is basically this region, that is the area served by this main feeder. So you can see that this triangular service area has been shown over here, means the rotated version of this equilateral triangle. So you can see these all are equilateral triangles. Now in order to compute the area of this triangle, that is the service area fed by this main feeder. So in order to compute the area, you can simply use half into base into height, and you can see from the figure that the base is S. So this is the base, that is S, and height is L6. So this is the height. Now we can represent S in terms of L6, and in order to do that, you can consider this right angle triangle, and then you can apply the Pythagoras theorem. So we can write L6 is equal to S square minus S square by 4 under root. So this will be under root 3 S by 2. So this is L6, and from here you can see S will be equal to 2 into L6 divided by under root 3. So now we can use this value of S in this equation, and correspondingly the area of triangle can be written as, so this will be L6 square divided by under root 3. So this is the area of the triangle that is served by one feeder in a hexagonal service area. So this is L6 square divided by under root 3. So you can use the value of the area over here, which we have computed earlier. So that is basically equal to L6 square divided by under root 3, and you will get the total load, and then you can use the formula of percentage voltage drop, which I have just shown you, and you can replace the value of load over here, and this is the percentage voltage drop. So it means the total percentage voltage drop will be this if you have the hexagonal service area, and the total percentage voltage drop will be this if you have the square service area. So everything else is same, only the value over here is different. So this is 0.667 over here, and over here this is 0.385. So it means for square service area the percentage voltage drop will be higher, and in hexagonal service area the percentage voltage drop will be lower. So now let's see the comparison of 4 and 6 feeder patterns.
In square shaped service area, the area served by one of the 4 feeders is equal to L4 square. So this is the area served by one feeder. The area served by 4 feeders will be equal to, that can be represented as total area in a 4 feeder network. So that will be the area served by one feeder multiplied by 4. So this will be 4L4 square. And similarly we can do for hexagonal shaped service area. So we have seen the area served by one feeder in a hexagonal shaped service area is equal to L square by under root 3. So this is the area served by one feeder. The area served by 6 feeders will be 6 into A6. So this is the total area in a 4 feeder network. This is the total area in a 6 feeder network. The kVA load served by one feeder in a 4 feeder network is given by S4, that is the total load served by one feeder. So it will be equal to product of area and load density. So the total load that will be served by 4 feeders will be equal to total load, that is TS4, that will be equal to product of the load served by one feeder into 4. Similarly, for hexagonal shaped service area, we can write that the total load served by one feeder is equal to A6 into D. So this is L6 square divided by under root 3 into D. The total load served by 6 feeders will be TS6, that is equal to 6 into S6, and this will be equal to this is in kVA. So this is the total load in a 4 feeder network, and this is the total load that is served by 6 feeder network. Now let's see the percentage voltage drop in the main feeder. So that is what we have discussed earlier also. So the percentage voltage drop in main feeder will be equal to K constant into 2 by 3 L4 into S4. So this will be equal to K into 2 by 3 L4 into L4 square into D, as we are computing the percentage voltage drop for one feeder. That's why we are using the load of one feeder. You can see this is the load of one feeder rather than this one. So this is the total area served by all 4 feeders, total load served by all 4 feeders, and this is the percentage voltage drop in one feeder. So this will be equal to 2 by 3 L4 cube into K into D. Likewise, we can represent the percentage voltage drop in a main feeder for 6 feeder network. That will be equal to 2 by 3 into K into L6 into S6. So this will be equal to 2 by 3 K into L6 into L6 square by under root 3 into D. You can see this S6 is basically the product of the area and the load density. So this will be equal to percentage voltage drop. Now let's see the load current in the main feeder at point A. Means if this is the feeder, this is the substation, then how much current is injected at this feed point? We need to compute that. So the load current in main feeder will be equal to, we can simply use the formula, that is apparent power is equal to under root 3 into V line to line into current. So from here you can see I4 will be equal to
S4 divided by under root 3 into V line to line. S4 is equal to L4 square into D under root 3 into V line to line. So this is the current in one feeder when we are considering the square shaped service area. Now let's see the current for hexagonal shaped service area. That will be equal to so this is the current for one feeder in square shaped service area. This is the current in hexagonal shaped service area. So you can see this is the total area in 4 feeder network, total area in 6 feeder network, total load in 4 feeder network, total load in 6 feeder network, percentage voltage drop in one feeder, percentage voltage drop in one feeder, current in one feeder, and current in one feeder. Now we are going to see the comparison between the total service area served by the 6 feeder configuration and 4 feeder configuration under two cases. Those two cases are thermally limited feeders and voltage drop limited feeders. So now we are going to see which configuration serves more area, that is either 6 feeder configuration or 4 feeder configuration. For that, first of all, we are going to assume that the feeders are thermally limited. Now what is the meaning of thermally limited feeders? It means that the feeder which is present in 4 feeder configuration and the feeder which is present in 6 feeder configuration, both are carrying the same current. So it means the current carrying capacity of both feeders is same. So we can write that I4 is equal to I6. I4 represents the current of the feeder in 4 feeder configuration. I6 represents the current of the feeder in 6 feeder configuration. And now we can express I4 in terms of apparent power and line to line voltage. So I4 is S4 divided by under root 3 V line to line. We have already seen this over here. So we are simply using this and this. And similarly, S6 divided by under root 3 into V line to line will give us I6. So we have seen that S4 can be written as D into A4 divided by under root 3 into V line to line. This can be written as A6. And now we can use the values of A4 and A6. The value of A4 is L4 square and the value of A6 is L6 square divided by under root 3. A4 means the area served by one feeder and this also means the area served by one feeder. This is for hexagon, this is for square. This will cancel out and correspondingly we can write that L4 square into under root 3 is equal to L6 square, and from here you can find out the ratio of both lengths, that is equal to this. So after computing this, now we can find out the relationship between the total area served by both configurations. So in order to do that, I can take the ratio of both areas, that is the total area served by 6 feeders and total area served by 4 feeders. So we know that total area served by 6 feeders will be equal to 6 into area of one feeder, means area served by one feeder, and over here this will be 4 into area served by one feeder. So this will be equal to 6 into, we know that A6 is L6 square divided by under root 3, 4 into L4 square. So this will be equal to 6 .
and now you can use this value over here. Correspondingly, you will have the total areas served by 6 feeder configuration will be equal to 1.5 times the total area served by 4 feeder configuration. So it means if the feeders are thermally limited, means if the feeders carry the same current in both types of configurations, then the area served by 6 feeder configuration will be equal to 1.5 times the area served by 4 feeder configuration. Now let's see the second scenario, that is if the feeders in both networks or both types of configurations are voltage drop limited, means the percentage voltage drop in both types of feeders is identical. So correspondingly I can write percentage voltage drop in 4 feeder configuration is equal to percentage voltage drop in 6 feeder configuration. And now I can write down the expressions for percentage voltage drop which we have seen over here. So we can use these values. So percentage voltage drop in 4 feeder will be equal to 2 by 3 L4 K into D into A4. So this is basically S4, that is in kVA, this is in miles, and this is percentage voltage drop per kVA mile. This 2 by 3 represents the lumped load. I can use the value of A4, that will be equal to L4 square. The value of A6 is L6 square divided by under root 3. So now this will cancel out. This will cancel out and you will have L4 cube is equal to L6 cube divided by under root 3. And correspondingly I can write L6 over L4 whole cube is equal to under root 3. This implies this is equal to 1.732, or we can also write it like this. So once we have computed the relationship between L4 and L6, or we can say we have determined this ratio, now we can compute the total area served by 6 feeder configuration and total area served by 4 feeder configuration. This will be equal to So if the feeders are percentage voltage drop limited, then the total area served by 6 feeder configuration will be equal to 1.25 times the total area served by 4 feeder configuration. So we can conclude that the total area served by 6 feeder configuration will be higher in this case, means when the feeders are thermally limited, rather than this case, means when the feeders are percentage voltage drop limited. Now we are going to extend the analysis which we have done for 4 feeder network and 6 feeder network for the general case, that is the substation service area with n primary feeders, and we are going to derive the generalized expression. In this article we are going to derive an expression for voltage drop that will be valid for n number of feeders emanating from the substation.
how the substation serves the service area with n primary feeders. For that, we should know what is meant by substation service area. The total area served by one substation is known as service area of the substation. So, how a substation will serve any area by means of feeders. So, let's suppose we have the substation over here, and this is the total area that is served by one substation. So, this is known as service area of the substation. And we know that substation serves any area with the help of feeders. So let's suppose we have n number of feeders which are emerging from the substation like this. So we want to compute the total area, that is, this is the total area that is served by one substation by means of n number of feeders. So we will see the area served from the substation by means of one feeder, and then we will see the percentage voltage drop calculations and the total area that will be served by n number of feeders. The total area served by one feeder can be computed using a diagram. So let's see the diagram. Suppose you have the substation over here. Let's name this location as A, and let's assume we have one feeder like this. Suppose this is point P. And now we want to see what is the shape of the area that is served by one feeder. Consider this example. Let's suppose we have any circular shape, and if there are different lines like this, or if we say dividing this circular shape into different n number of sections, then you can see the shape of any one section looks like triangular shape. So we can assume that the area served by one feeder is of triangular shape. That will ease our analysis because we have assumed that the total area served by substation looks like this. So we can assume that the area served by this one feeder looks like this. And in that sense, if we apply this analysis for n number of feeders, we will have n such triangles, and that will form the circle like this. Let's assume this angle is theta. This is the primary feeder, this is the substation, and this is the area served by one feeder. So let's assume the length of the feeder means that starts from this point and ends at this point. This length is Ln, that is the length of one feeder. And in order to see the total area served by one feeder, let's assume the differential area first. So I can draw the differential area like this, and the width of differential area is dx, and let's assume that this differential area is located from substation at a distance of x miles. We are going to consider the unit of length as miles. So what we have done so far, we have considered a substation, we have considered one primary feeder, and we are assuming that the area, or we can say the load that is served by this one feeder is basically present in this triangular shape service area. And we are going to see the area that will be served by this one feeder. For that, we have assumed a differential area over here having this width. This is located at this distance, and this is the length of the entire feeder. So we can express the load density as
So D is the load density, that is the total load divided by area, that is kVA per mile square. X represent the location of DA from substation, or we can say this is the distance from substation of DA, and we can also define AN, where AN is the total area served by one feeder. Its unit is mile square. Its unit is mile. And Ln is the length of the feeder. Let's define load first of all. So Sn is the total load in kVA that is served by one feeder. So this is the total load in kilovolt amperes served by one feeder, and ds is the differential load served by the feeder in this differential area dA, and theta is the angle between AB and AD, and we can also say theta is the angle between AB and AC. So these are some of the notations which we are going to use in the derivation. So first of all, we are going to see the differential load served by each feeder in differential area. So this is the differential load. Let's see how we can compute this differential load that is served by one feeder in this differential area dA. So differential load is given as differential area into total load density. So this is total load density, that is in kVA per mile square, and this differential area is in mile square. So this will give you the result in kVA, that is the total load present in differential area dA. So this is equation number 1. From figure we can find out tangent theta. So for tangent theta, I can say that this is y and this is also y. So tangent theta can be written as perpendicular over base. So this is y and the base is x plus dx. So this is dx, this is x, and this is the height. So perpendicular over base, that will give us tangent theta. So this will be y over x plus dx, and we can say y is equal to x tangent theta plus dx tangent theta. As dx is very small as compared to x, that is quite evident from this figure. This dx is very small as compared to x, so we can neglect this term and we will be left with this term only. So we can say that y is equal to x tangent theta. Let's name this as equation number 2. This is the total service area of one feeder. Let's see how we can compute it. So far we have computed this area's load, or we can say the load served by differential area, and we have computed the expression relating the theta, y and x, that is given by equation number 2. So we have already defined AN over here, that is the total service area served by one feeder. So we can say that total service area of the feeder can be computed by integrating the differential area from x is equal to 0 to x is equal to
length of the feeder. So we can say that if we integrate this differential area starting from x is equal to 0 to x is equal to length of the feeder, we will get the total surface area that is served by one feeder. So you can see this expression, and now let's see what is dA, or what is the value of differential area. So that can be easily computed. So this is the differential area, and we can see the height of the differential area is 2y, and the width of the differential area is dx, and we can approximate this like this. So the differential area will be equal to the product of dx and 2y. The other way around is the integration means the area under the curve. You can simply take the sum of area of this triangle and area of this triangle, and you can simply apply the basic formula for computing the area of the triangle, that is half into base into height. But I'm going to use the integration, so let's see that this will be equal to an. Let's use the value of y from equation number 2. Y is equal to x into tangent theta. So we can use equation number 2 over here. So this is the area served by one feeder. Now let's see the total load that is served by one feeder. Over here we have computed the differential load, and now we are going to compute the total load. So the total load will be equal to integration of differential load from x is equal to 0 to x is equal to length of the feeder, and we can also express the total load that is in kVA. This will be equal to load density, that is in kVA per mile square, into area of one feeder, or we can say area served by one feeder. This is in mile square. This gives equation number 4. You can see if this mile square and this mile square will cancel out, and you will get the result in kVA. So we can say Sn is equal to D into An. Now we can use equation number 3 in equation number 4. So this is equation number 3. We can use the value of An over here. We will get, this is equation number 5. Now assume that the total load is located, or we can say lumped, or we can say concentrated at 2/3 of the distance. So we can assume in this figure that the total load that is served by one feeder, that total load is located at 2/3 of the length from the substation. So in that case, the effective length becomes 2/3 of the total length of the feeder, as we are assuming that load has been lumped at 2/3 of the distance. So let's name this as equation number 6. So the percentage voltage drop of area is given by, this will be equal to K, that is basically
percentage voltage drop per kVA into miles. So this is a constant K, and the unit is percentage voltage drop per kVA mile. And if we multiply this K by Sn, that is the total load served by one feeder, the unit of Sn is kVA. And if we further multiply this equation by length, which is in miles, you can see kVA and mile will cancel out and you will only get the percentage voltage drop. So now we can use 5 and 6, that is this value of total load served by one feeder over here and the effective length over here, and we will get the generalized expression for percentage voltage drop. So this is the expression for percentage voltage drop, and from figure you can see this is 2 theta for one feeder, and we are assuming that the total area of entire substation is in circular shape. So if we multiply 2 theta by the total number of feeders, we will get 360 degree, or we can simply say that this circular shape, which is basically 360 degree, if there are n number of feeders, that is if we divide 360 by n, we will get 2 theta. How 2 theta? As you can see, for one feeder we are having 2 theta. So it means if you divide 360 degree by n number of feeders, you will get 2 theta. So we can write this will give us theta is equal to 360 degree divided by 2n, and we can use this value over here and you will get percentage voltage drop for n number of feeders. You can see now you are having n in this equation, and n represent the number of feeders. So this equation is valid for n equal to or greater than 3. The reason is, let's assume if you have n is equal to 1, then this will be 360 divided by 2. We will have 180 degree and tangent 180 degree as 0. And if n is equal to 2, this will be tangent 90 degree and tangent 90 degree is infinity. So that is also not possible. So this equation is only valid for n is equal to or higher than 3. Means if your number of feeders are 3 or higher than 3, then you can apply this equation in order to compute the percentage voltage drop.